So hello everyone, in this video we are going to discuss about the Hemichordata. इससे पहले वाले फाइलम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो हेमिकॉर्डेटा मोस्टली लिव इन द ब्यूरोज, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. बॉडी इज़ सॉफ्ट वर्म लाइक एंड इट इज़ डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. हियर यू कैन सी दिस डायग्राम. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द हेमिकॉर्डेटा, जहाँ पे की जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है: प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. सो it is a U-shaped like body. They are triploblastic and have organ system level of organization. Body wall is single layer epidermis. Coelom क्या होता है? They are enterocellous and help in burrowing. True notochord absent होती है. So many taxonomists do not consider these animals as the chordates. उनकी अलग उनको रखा जाता है. Chordates के अंदर वो कंसिडर नहीं करते हैं इनको. Digestion is complete with permanently open mouth and they are ciliary feeders. They feed on the plankton, sand and mud to digest the organic matter from it. And उनके अंदर क्या होता है? Stomachord present होती है in the proboscis region. Respiration जो होती है that is through the U-shaped dorsoventral pharyngeal gill slits. Circulation is open and blood is colorless. Central sinus जो है that act as the heart. एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोबोसिस, वहाँ पे प्रोबोसिस के अंदर क्या होता है? सिंगल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है. नर्वस सिस्टम, intraepidermal nerve plexus and dorsal and ventral nerve cord is there extending to whole length of the animal. कोलर रीजन के अंदर जो नर्व होती है वो डॉर्सल एंड होलो होती है एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द ट्रू कॉर्डेट फीचर. सेंस ऑर्गन, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के अंदर. रिप्रोडक्शन जो होता है तो यहाँ पे सेपरेट सेक्सेस होते हैं. गोनाड्स 1 से लेकर न्यूमरस हो सकते हैं. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है. उनका जो लार्वा है उसको टॉर्नेरिया बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हैबिट ऑफ रोटेटिंग इन सर्कल. वो सर्कल में रोटेट करता रहता है. Tornaria resembles the bipinnaria of the echinoderms and a connecting link between echinoderms and the chordates. तो echinoderms और hemichordata के बीच में जो लिंक है that is of the जो उनकी resemblance है लार्वा के अंदर. They are either solitary or colonial. Example is Belanoglossus. सो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ दी बेलानोग्लॉसिस, जहाँ पे कि आप देख सकते हो कि जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है: प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, और ये यू शेप का ऑर्गेनिज्म है. सो दैट्स ऑल फॉर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नो. सो क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा, उनको 2 कैटेगरीज में, 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: एंटेरोप्न्यूस्टा एंड टेरोब्रैंकिया. सो क्लास 1 की अगर हम बात करें दैट इज़ एंटेरोप्न्यूस्टा. सो एंटेरोप्न्यूस्टा के अंदर क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सो दे आर फ्री सॉलिटरी बेंथिक एनिमल्स. बॉडी इज़ लॉन्ग वर्म लाइक. प्रोबोसिस टेपर्स anteriorly and epidermal cells multiciliated होते हैं. Body comprises of circular, longitudinal and radial muscle fibers. Gill slits are with tongue bar. Alimentary canal is straight with terminal anus. Sexes are separate. Fertilization is external. Enteron means gut plus में neustos. So burrowing animals होते हैं commonly called as the acron or the tongue worms. Development include the tornaria larva in some. तो जो larva form होती है उसको tornaria बोलते हैं. They lack the sexual reproduction. Body consists of proboscis, collar, trunk, and the collar is without the lophophores. That is the tentaculated arms. For example, the Belanoglossus, tongue worm. नेक्स्ट इज़ द एक्रोन टंग. क्या होती है? दैट इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द echinoderms and the chordates. Now the next class, which is the pterobranchia. Ptero means feather and branchia means branchion. Gills are present. So they are sedentary colonial tube dwelling animals. Body is
shaped, proboscis shield shaped होता है, epidermal cells are always monociliated, body wall is comprised of longitudinal and radial muscle fibers, gill slits lack the tongue bar, and the alimentary canal is U-shaped with anus near the mouth. Sexes may be separated or may be united. Fertilization is internal, development direct, may or may not include a free swimming larval stage. Collar bearing ciliated arms and living inside secreted chitinous tubes. So इसके दो ऑर्डर्स हैं इस क्लास के, दैट इज़ रैप्डोप्लूरिडा. रैप्डोप्लूरिडा जो होता है colonial zooids connected by the stolon, collar with the two tenticulated arms, no gill slit, single gonad, colony made up of several interconnected zooids and single genus. इसका जो genus है वो single ही है, Rhabdoplura. Next is the Cephalodicida. Colony is made up of several individual zooids and solitary collar with several tentaculated arms. Single pair of gill slits are present, single pair of gonads are present, for example the cephalodiscus. सो हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर डिफरेंस क्या है, क्यों हमने हेमिकॉर्डेटा को एज अ सेपरेट क्लास की तरह टेक्सोनोमिस्ट रखते हैं? बिकॉज हेमिकॉर्डेटा कंटेन एपिडर्मल नर्वस सिस्टम, कॉर्डेटा के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है. हेमिकॉर्डेटा डज नॉट कंटेन अ नोटोकॉर्ड but chordata contain a dorsal tubular notochord. Hemichordata lacks post-anal tail but it is present in chordates. Hemichordates have open circulatory system but it is closed in chordates, and the hemichordata contains a stomochord but it is not present in case of the chordates. They lack the blood pigment but the chordates have the blood pigment. The transportation of respiratory gases and metabolic waste occurs through the body wall in case of the hemichordata, but in case of the chordates that is occurred through the blood. So in the hemichordates there are numerous pair of gill slits are present and which is dorsal. In case of the chordates there are 5 to 7 pair and lateral in position. Epidermis is ciliated and single layer in case of the hemichordates, but in chordates that is non-ciliated and stratified. In case of the hemichordates there are no paired appendages, but in case of the chordates some have the paired appendages. Gonads are numerous in hemichordates. Exoskeleton is present. Metamerism is there. Metamerism is absent in case of the hemichordates. But if we see the chordates, so gonads, one pair of gonads in most of them, and the exoskeleton is present in them, and metamerism is present in them. So that's all for today. एंड नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इससे पहले कि जो हमने फाइलम करे थे तो जोलॉजी की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.